Good morning, students, and a very warm welcome to your English literature class. Today we will deal with the poem Hope is a Thing with Feathers, which is given on page number 81 of your English Gulmohar book. So, this poem is written by Emily Dickinson. Okay, she was an American poet and she has written almost 1800 poems. Okay, 1800, you can imagine, 1800 poems likhi hain unhone almost. And out of those 1800 poems, it is only that less than a dozen, means less than 12 poems got published, and less than, out of so many poems that she has written, not even 12 poems got place in literature. Okay, so she was a very prolific writer, means she was a very you can say she has written number of poems, number of works she has in poetry, but they did not get much place in literature. Okay, so this poem Hope is a Thing with Feathers, here the poetess Emily, she compares hope, the hope that we have, ummeed jo hoti hai, hope, she compares hope with a bird. Okay, hope is like a bird. Okay, and it has feathers. Hope is a thing with feathers. When she says this, the title of the poem itself is Hope is a Thing with Feathers. It means that she is comparing hope to a bird. It has feathers. Okay, and through this poem she is conveying to her readers that whatever happens, whatever toughest situation we face, or even in the most difficult times of our life, there is only one thing that is consistently there in our heart. It is hope. A hope for better things, a hope for a better future, a hope for better things coming up. Okay, so hope, जो उम्मीद होती है हमारी, वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, जो हमें हेल्प करती है कि हम किसी चीज़ को कितनी पॉजिटिवली ले सकते हैं, कितने अच्छे से उस चीज़ से डील कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड आउट द पोएम टू यू एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. Hope is a thing with feathers that perches in the soul and sings in the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Okay, so this poem is a very short poem. As you can see, there are only 3 paragraphs of 4 lines each. Okay, so it is a poem of 12 lines, and it has a deep meaning in it. Okay, this poem has a very conventional meaning, a meaning that is required for human life, a meaning that is necessary for our daily life, that is necessary when we face the toughest of times of our life. Okay, so the first line says hope is a thing with feathers. Okay, so a thing with feathers, there's only one thing with feathers, that is a bird. So hope is compared to a bird. Hope is like a bird, it has feathers. Okay, that perches in the soul, means it sits and rests in the soul of the human being. Hope, it rests and resides, you can say. Hope रहता कहाँ है? Inside the human soul, inside the soul of the human being. जो इंसान की आत्मा है, जो इंसान का मन है, उसमें रहता है hope, उम्मीद. Okay, it perches means to sit and rest. Okay, so the hope that is there, it is always inside us, it is within our soul, and whenever we face the tough times, it helps us, it motivates us to be better. Okay, and sings the tune without the words and never stops at all, means hope is like a bird, and birds sing songs, right? Birds, their voices are so sweet most of the times that it is said that birds sing. Okay, their chirping is so sweet, it is so blissful to the ears, it is like a treat to the ears. So hope is also compared to a bird which can sing very nicely, and it sings in a way that the feel of the song, it is there in the feel, the whatever hope is there in our heart,
it can always be felt, it cannot be heard, it has no voice, it cannot, there's no sound to this hope. Okay, it sings without words, without uttering a single word. Okay, but there is always hope, and it sings in a way that it enlightens our soul. जो हमारा soul है उसको enlighten करता है, उसको cheer up करता है, hope. Okay, and it does not have any words, it sings without words, without uttering a single word. एक शब्द कहे बिना वो पूरा गाना गा जाता है, and it is there for us in the extremest of times. So literally it does not mean that hope is singing a song. Okay, hope is not like singing something, it is there in our heart, it is there in our soul, and whenever we have some tough times, whenever we have difficult times, there's this hope, that is singing in our heart. And what happens, that we are blessed, we get motivated by that song, we get motivated by that hope, and we move forward in our lives. Okay, and the sweetest in the gale is heard, means the sweetest hope, means the जो होप होती है, जो उम्मीद होती है हमारी, वो सबसे ज़्यादा हमें कब मिलती है, जब हम सबसे ज़्यादा टफ टाइम्स में होते हैं, स्टॉर्मी टाइम्स में होते हैं. ठीक है, गेल मीन्स स्टॉर्म, GALE, गेल इट मीन्स स्टॉर्म. ओके, सो जब हमारी लाइफ में तूफानी सिचुएशन आती है, तूफान मतलब नॉट लिटरली द स्टॉर्म, बट जब कोई बहुत मुश्किल सिचुएशन आती है, बहुत डिफिकल्ट टाइम आता है, देन द होप वट एवर इज देयर, it comes out and it motivates us. सबसे अच्छी, सबसे स्वीटेस्ट काइंड ऑफ होप कब आती है, जब हम सबसे मुश्किल सिचुएशन में होते हैं. जो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं उसमें तो हम खुद को ऐसे ही मना लेते हैं, there's little hope, but in the toughest of times we get the sweetest hope. Okay, and sore must be the storm that could abash the little bird that's kept so many warm. मतलब उम्मीद जो है उसको टूटने के लिए, उसको तोड़ने के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन चाहिए जो हमारी उम्मीद को तोड़ सके, जो ऐसा हो कि अगर वो उम्मीद हमारे, मतलब जो हमारी उम्मीद हमारे दिल में है उसको तोड़ने के लिए, उसको मतलब कि कोई उम्मीद ही ना बचे किसी सिचुएशन की, उसको वो पॉइंट आने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम चाहिए होता है, एक बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन चाहिए होता है. ठीक है, अगर उतनी टफ सिचुएशन नहीं होगी तो हमारा होप नहीं टूटेगा, इट विल ऑलवेज बी देयर, एंड द टफेस्ट टाइम्स विल फाइंड अस विद द स्वीटेस्ट होप्स. ओके, सो द स्टॉर्म, द difficulty that is there, it has to be very very strong for to subside the hope. ठीक है, ताकि होप हमारी कम हो जाए उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गी सिचुएशन चाहिए, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफ़िकल्टी चाहिए जिससे हमारी होप ख़त्म हो, जिससे हमारी उम्मीद ख़त्म हो. उम्मीद कब ख़त्म होगी, जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम्स आएगा, एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम्स होती है तो भी हमारे पास एक उम्मीद रहती है कि ऊपर वाला है एंड ही विल गाइड अस, गॉड इज़ देयर एंड ही विल गाइड अस. दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ होप ओनली, राइट. सो व्हेन वी लूज ऑल होप देन वी हैव वन होप. ओके, एक उम्मीद हमेशा रहती है. सो जो उम्मीद है उसको कंप्लीटली तोड़ा जा ही नहीं सकता. इट रिक्वायर्स द टफेस्ट ऑफ स्टॉर्म्स, toughest of situations, toughest of times, the most severe sadness of life to break hope, and still the hope will somehow or the other come back to us. Okay, जो उम्मीद है वो टूटती ही नहीं है, it is always there inside us, it is always there in our soul. Okay, I've heard it in the chillest land and on the strangest sea. मतलब जो चिलेस्ट लैंड है, जो सबसे ठंडी, सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है, ठीक है, इट मीन्स जो सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन है. द पोएटिस शी सेज दैट शी हैज़ सीन होप इन द चिलेस्ट लैंड, मीन्स जो सबसे ठंडी जगह है, जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है लाइफ होने की, जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है बचने की, वहाँ भी उन्होंने होप देखा है, उन्होंने होप महसूस किया है. ओके, एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी मतलब जहाँ से नेविगेट ना किया जाए, जहाँ से कोई रास्ता ना पता हो. सी इज़ अ वेरी बिग वाटर बॉडी, राइट, एंड अगर वहाँ से हमारा रास्ता खो जाए तो हम कैसे ढूंढेंगे रास्ता. ठीक है, हमारे पास उम्मीद होनी चाहिए ना रास्ता ढूंढने की. तो इन द स्ट्रेंजेस्ट ऑफ सी एंड इन द चिलेस्ट ऑफ द लैंड द पोएटेस सेज दैट देयर इज स्टिल होप. एकदम कठिन से कठिन सिचुएशन होगी
तब भी जो है होप देयर, इट विल ऑलवेज बी देयर, इट विल always be there within us, it will always help us in our lives, it will always motivate us. Okay, then I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity. Okay, it means that जो hope है वो कहीं ना कहीं हमेशा रहती है. It is always there in the extremest times, like in the chillest of land and in the a sea, a place where we cannot be guided by anyone, but there is still hope. Okay, so I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Crumb means the smallest part, the smallest portion. Okay, so even in extremity, extreme times, even in the extreme bad times, even in the severest of times, hope has never demanded something, it has never asked something from us, it has always given us, it has always motivated us, but never asked even a smallest of things from us. Okay, it has never asked for anything, it is always giving, it is always bestowing the motivation upon us. Okay, and it is like a small bird which is always there within our soul, it resides in our soul, it perches means it rests in our soul, it is there in our soul, हमारे मन में, हमारी आत्मा में होता है होप, उम्मीद, जो कभी टूटती ही नहीं है. Even in the strongest of times, even in the worst of the times that we face, hope is still there. Okay, so this was the poem. Other than that, I hope you must have understood the poem. It was an easy poem, a short one, but it has a very deep meaning that hope is always there with us. Hope never leaves us alone. Okay, it is always there in the toughest of times, in the severest of times, in the extremest of conditions. Hope is always there. जो उम्मीद है वो हमेशा रहती है. कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ हमें कोई उम्मीद ना दिखे, कोई रास्ता ना दिखे, बट होप इट विल ऑलवेज बी देयर विद अस. ठीक है, हमेशा हमारे अंदर रहेगा, हमेशा हमें मोटिवेट करता रहेगा और बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं मांगता. इट डज नॉट इवन डिमांड अ क्रम्ब ऑफ अस. ओके, इट डज नॉट इवन डिमांड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अस. इट इज ऑलवेज देयर विद अस, ऑलवेज मोटिवेट्स अस, बट हमसे बदले में वो कुछ भी नहीं चाहता. इट ऑलवेज सपोर्ट्स अस. होप इज अ थिंग विद फेदर्स. ओके, सो होप जो है एक चिड़िया की तरह है जो हमारे अंदर ही रहती है. इट ऑलवेज रिसाइड्स विद इन अस. ओके, सो ये पोएम जो है इट इज़ लाइक अ हिम, यू नो, अ सेक्रेड सॉन्ग, राइट? सो अ हिम इज अ सेक्रेड सॉन्ग. दिस पोएम इज लाइक अ हिम ऑफ प्रेज ऑफ होप. ठीक है, होप की तारीफ की जा रही है. इट इज लाइक प्रेजिंग होप. ओके, एंड इट इज रिटन यू नो टू यू कैन से ऑनर. ठीक है, जो ह्यूमन कैपेसिटी है होप को बिल्ड रखने की, उसको ऑनर करने के लिए ये पोएम है. ठीक है, इट इज़ जैसे जो ह्यूमंस की एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है उनकी, कि जो उम्मीद है वो कभी उनमें मरती ही नहीं. इट इज़ ऑलवेज देयर इवन इन द एक्सट्रीमेस्ट ऑफ टाइम्स, इवन इन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस, इट इज़ ऑलवेज देयर. सो दिस पोएम इज लाइक अ ट्रिब्यूट टू hope. It is a praise of hope. Hope is always there. It is always there with the humans. और humans जो हैं वो hope कभी मरने ही नहीं देते. Even in the toughest of times, जो उम्मीद है वो हमारे साथ रहती है, हमें मदद करती है, हमारे problems को face करने में हमारी help करती है. Okay, and that's it. I hope you all must have understood the poem. And this poem is, you know, the meaning that it conveys, the meaning that it gives, this poem, it tells us that hope is one of the sweetest things that are there in the world. कोई भी ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती जो होप से बढ़कर हो, उम्मीद से बढ़कर हो. कितना भी हम टूट जाएं, कितना भी हम बिखर जाएं, कितनी भी बुरी से बुरी कंडीशंस हो हमारी लाइफ की, हमारे सिचुएशंस कितने भी खराब हो, कितने भी एडवर्स सिचुएशंस हो, बट देयर इज़ ऑलवेज होप. ठीक है, जो उम्मीद है वो कहीं नहीं जाती, वो रहती है हमारे अंदर ही. ठीक है, जो सबसे खराब सिचुएशन होता है उसमें भी हम उम्मीद लगा लेते हैं कि जब ऊपर वाले ने किया है तो कुछ अच्छा सोच के ही किया होगा. ठीक है, सो इन दिस पोएम ऑल्सो एमिली डिकिंसन, शी इज जस्ट प्रेजिंग होप. शी इज saying that hope is the sweetest thing that is there. It is always there to motivate us. It helps us
and it will keep building us until and unless we as human beings just die. Okay, डेथ के बाद ही होप खत्म होती है, हमारी डेथ के बाद ही हमारी होप्स खत्म होती हैं, वरना होप इज अ थिंग दैट इज ऑलवेज देयर. एक कहावत भी है, आप लोग ने सुनी होगी शायद, उम्मीद पे दुनिया कायम है. ठीक है, तो उम्मीद, होप is the thing that runs the world. It is there in each and every person. Each and every human being has some or the other kind of hope. आज अगर हमारी सिचुएशंस खराब हैं, सो वी होप दैट नेक्स्ट डे हमारी सिचुएशंस अच्छी होंगी. आज अगर हमारी सिचुएशंस अच्छी हैं तो हम सोचते हैं कि नेक्स्ट डे हमारी सिचुएशंस और अच्छी होंगी. वी आर ऑलवेज होपिंग फॉर द बेस्ट टू हैपन. एंड इन द सीवियरेस्ट ऑफ टाइम्स, जो सबसे खराब सिचुएशन होती है हमारी लाइफ में, जो जिस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया, सब टूट गया है, there's nothing left in our life, even at that point of time you have some kind of hope that is there to help you, to motivate you, to help you overcome your sadness. Okay, so there's always some or the other kind of hope that is present within us, and it helps us to motivate ourselves and live our lives peacefully. Okay, so this was all about the poem. I'll send you the word meanings and the question answers in the PDF format, so you can write it in your fair copies. And children, you also have to write the poem. Okay, the entire poem, पूरी poem लिखनी है आप लोग को कॉपी में. Write it very neatly, and after that you will write the word meanings and the question answers. चिल्ड्रन, जब मैं आप लोग की कॉपी चेक कर रही थी तो मैंने ये ध्यान दिया आप लोग की कॉपीज चेक करते हुए कि आप लोग ने या तो पोएम लिखी है या तो क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं. बहुत कम ही ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पोएम भी लिखा था और क्वेश्चन आंसर्स भी लिखा था. सो यू हैव टू राइट बोथ द पोएम, द वर्ड मीनिंग्स एंड द क्वेश्चन आंसर्स. ऑल थ्री ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू राइट. डू नॉट स्किप एनीथिंग. ओके, राइट एवरीथिंग, राइट द पोएम वेरी नीटली. इफ यू वांट, you can decorate the poem. That's all for today's class. Thank you, students. Have a good day.